Hi, Namaskar, and welcome to Spark It. Dr. Dalip Singh Doolittle. Dr. Dalip Singh Doolittle is the one who we have today. One of the very unconventional professions. अगर आपके घर में, if you have a pet, उसको कुछ परेशानी है, then who do you call? You call Dr. Dalip Singh. Sir, welcome to Spark It. कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहला सवाल और सबसे बेसिक सवाल. Why a veterinarian? Why a veterinarian is like an internal, feeling. Right from the beginning of my childhood, I was I felt connected with animals, and there are certain questions in my mind कि यार कोई तो होगा जो इनको treat करता होगा. In my school time, I used to see a lot of stray animals. जी. On those times, I was not aware about being a vet or something like that. Even I was not aware about कि animal doctors भी होते हैं क्या. हाँ, तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे. When did you first start feeling for the animals? The feeling was there right from my childhood when I was quite, maybe I guess 4-5 years of age. So I was having a passion of, a kind of animal love or, feeling of kindness right from my childhood. But later on, when I was into my schools, like when I was in my 8th class, 9th class, so I used to come across multiple stray animals which got injured in night accidents, road accidents. So I used to think यार कि इनका भी कोई इलाज करता होगा because I was quite, I was not financially well, है ना, I was into schools, so खुद तो कुछ नहीं कर पाता था, बट जितना हो सकता था कि किसी को साइड ले गया कि यार पैम्पर कर दिया कि भाई ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें उस टाइम से थी. So basically the compassion and the love that you felt, that is what you were expressing, because resources तो आपके पास कुछ थे नहीं, you were not a doctor, and आपको ये भी नहीं आइडिया था उस वक्त कि कुछ वेटनरी डॉक्टर भी होता है. कुछ नहीं पता. Okay. So this was, and this is which city we are talking about, sir? I was in Delhi. आप दिल्ली में, which side? Saket, South Delhi. Saket, South Delhi. Okay. Then after that, what happened? Like, how did you discover veterinary sciences? So along with the animals, I was having interest in biology right from my 6th, 7th class की हाँ यार bio मुझे पसंद आ रही थी. Okay. So I took physics, chemistry, biology, and while I was into my 11th class, I met a teacher of mine. She was my biology teacher. So I asked her multiple questions कि यार आगे मैं क्या करूँ, मुझे BSc तो करनी नहीं है, तो what should I do? कहता यार तू डॉक्टर बन जा, बायोलॉजी है. मैं कहा डॉक्टर बन तो मैं एनिमल डॉक्टर क्यों ना बनूं, तो मैम एनिमल्स का कैसे क्या रहता है. हाँ. तो बेटा कहता कि होता तो कुछ भी नहीं है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वो आप क्लियर करो एंड देन ऑनवर्ड्स. सो सिंस माय 11th क्लास आई डिसाइडेड कि मुझे वेट ही बनना है. एंड then after my 12th I fought the entrance exam and eventually landed up in Rajuvas Bikaner. Sir, the teacher who guided you, I would love to know her name, please. She was my biology teacher. Her name was Purvi Das. And right now, ma'am, thank you very much for guiding a person to the right profession. As parents, as teachers, we really need to see what our kids are actually interested in. Because कई बार ये देखा गया है कि चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, they are just guiding the students to some certain standard professions. कि आप डॉक्टर बन रहे हैं तो डॉक्टर नॉर्मल वाला जो एक कहते हैं कि डॉक्टर, या आप इंजीनियर बन जाइए, इस तरीके के प्रोफेशंस में आज की डेट के अंदर भी पेरेंट्स एंड टीचर्स आर पुशिंग. So let us try and make sure, especially a request to the teachers, please be like Dr. Purvi Das, जिन्होंने दिलीप सर को गाइड किया in the right direction. Sir, so 12th के बाद you said that there was an entrance test. So what entrance test are we talking about? At that time there was a combined test, है ना, AIPMT, RPMT. इंडिया लेवल पे था तो AIPMT, स्टेट लेवल पे था तो DPMT, RPMT. तो उस टाइम पे वो मैंने because I'm from Rajasthan, so I gave RPMT, and in that exam I got qualified for this veterinary entrance exam, and I landed up in Rajuvas Bikaner. And there's a government organization. Okay. You know, it's a huge big college along with the hospital. So I did my graduation from there only. Sir. Then onwards, I again gave an entrance exam on India level for the specialization, and I did my post graduation from surgery and radiology, Jabalpur, Madhya Pradesh. Perfect. So इसके अंदर सर मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि as you said that resources were very limited. तो पेरेंट्स की तरफ से कभी प्रेशर नहीं था कि बेटा तूने डॉक्टर बनना है तो नॉर्मल डॉक्टर बन, ये कहाँ जानवरों के पीछे पड़ रहे हैं? इस चीज में मेरे मॉम डैड का मैं जरूर बोलूंगा कि उन्होंने मेरे को कभी ना तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू साइंस ले, ना उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि तू डॉक्टर बन. लेकिन इट वाज ऑल अबाउट मी कि मैं बस and your interest. Yeah, it was all about my interest.
hats off to your parents. And this is another message for the parents. Please try and make sure that you listen to the kids. Let them grow, let them be. Great, sir. तो जब आपने टेस्ट दिया ऑल इंडिया एंट्रेंस का, एंड आई बिलीव यू क्लियर द नॉर्मल एमबीबीएस एंड एवरीथिंग, सो कुछ आपको ऐसा नहीं लगा कि यार पैशन तो ठीक है, बट डॉक्टर तो मैं अपना नॉर्मल इंसानों का ही बन सकता हूँ? ऐसा खुद को नहीं लगा, लेकिन बोलने वालों ने, जो जो फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी के हैं, कि यार जानवरों का डॉक्टर क्या बन रहा, हाँ। इंसानों का बन। मतलब होता उसमें ये है ना कि इट इज ऑल अबाउट योर पैशन। जिस पैशन के साथ आज मैं यहाँ पर काम कर रहा जी। हूँ, जितना मैं खुश शायद यहाँ आज हूँ, जी। जिस भी जगह पे, जिस भी मुकाम पे मैं हूँ, हो सकता है अगर मैं एमबीबीएस डॉक्टर होता तो नहीं कर पाता। रीजन बीइंग आई डोंट फील अटैचमेंट, दैट मच ऑफ कंपैशन विद ह्यूमंस। सर, इंसान जिस तरीके की हरकत करते हैं ना, जानवर ज्यादा अच्छे हैं। या सर, फिर then what happened? So बोला लोगों ने, बट आई जस्ट चेज माय ड्रीम्स एंड या। सर, ह्यूमन डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं. So how many years did it take you to become a veterinarian? इट सेम टाइम इंटरवल लगता, 5 साल का टाइम इंटरवल लगता टू बिकम अ वेटरिनरियन। So मतलब it is not के थोड़ा इजी राउट हो जाता है या चल जाता है, ऐसा कुछ भी कम नहीं। पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। when you get into the veterinary college, जी। so you have to give 5 years of your life for the profession. wow, You have to complete all the exams, है ना? that means जो एक डेडिकेशन और जो एक फोकस चाहिए वो इसके अंदर कम तो किसी भी एंगल से नहीं है, ज्यादा ही होगा। Definitely. एंड आफ्टर दिस जो बेसिक आप अपना डॉक्टरी कर लेते हैं, उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद it all depends on the interest, हाँ, whether you want to be a gynecologist or pathologist or a जी। clinician, ठीक है? तो on the basis of the इसमें interest, भी आपके अलग अलग गायनोकोलॉजिस्ट और ये सब पैथोलॉजिस्ट सब होते हैं इसमें सब भी? होता है, ये सब वाओ, ओके। सो आपने क्या स्पेशलाइजेशन किया सर? So, in order to become a good clinician, one has to be in upper hands in surgery or medicine. Okay. So, I opted for the surgery and radiology. Surgery and radiology? Yeah. For animals? Yeah. Okay. And how much time does that take? It took me 2 years for the post graduation and 1 year for the preparation. So, overall 3 years. मतलब प्रिपरेशन इसमें भी चाहिए। अगर किसी को भी लग रहा है कि यार चलो हम ऐसे ही बन जाते हैं, दिस इज अ फील्ड ऑफ पैशन. सो प्लीज बी काइंड इनफ टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट दिस हैज टू बी योर कॉलिंग एंड यू कैन नॉट जस्ट come and become a veterinary doctor. Take care of yourself and understand what is it that you actually want to do. And if you are really into taking care of the ones who cannot speak for themselves, then this is the field for you. Sir, the ones who cannot speak for themselves, how do you understand कि कोई अगर आपके पास डॉग आया या कैट आई, and for that matter guinea pig या rabbit, how do you understand the pain? See, if you don't have compassion or if you don't have the feelings for your patient, you cannot be a good clinician. Absolutely. So if you are having an attachment or bonding, so definitely you will come to know कि problem है कहाँ पे. Pet parents बता कर क्या रहे हैं, exact कोई problem है या नहीं है. So we used to correlate things, okay, and give our opinions. Sir, कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि सरप्राइजिंग, शॉकिंग और ह्यूमरस रहा हो इस जर्नी में आपकी अभी तक? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो सरप्राइजिंग, शॉकिंग रहे हैं जी, बट वन ऑफ द इंसिडेंसेस व्हिच आई कैन रिकॉल इज लाइक देयर वाज अ पेट. तो उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि ही हैड फॉलन फ्रॉम अ हाइट. सो द पेट पेरेंट रश्ड इनटू द हॉस्पिटल एंड शाउटिंग, डॉक्टर साहब कुछ करो, उसकी गर्दन टूट गई है. डायग्नोसिस लेके आए थे उसका? हाँ जी, हाँ जी. Okay. So before going into X-ray rooms or going into some procedures, I clinically examined him, and when I examined him, I came to know कि he was like कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है. मैं कहा गर्दन तो नहीं टूटी है इसकी for sure, बाकी और चीजें हो सकती हैं. So finally क्या निकला? Finally कुछ नहीं था, that was just a sprain. But the pet was also acting कि भाई मेरे को चोट लगी. Yeah, exactly. He came like lying down and all. So I said कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, but when I clinically examined him, so I couldn't found a fracture. सबसे ज्यादा नखरे वाले डॉग्स कौन से होते हैं? डॉग्स तो सारे नखरे वाले होते हैं. It all depends कि how you pamper them and all. बट एक डीएनए के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई ऐसी ब्रीड? The small breeds, Shih Tzus, Lhasas, they are like more of tantrum. टेंट्रम वाले ज्यादा है. Yeah. ओके. सो एंड नाउ कमिंग डाउन सर, ये आजकल काफी अडॉप्शन एंड गेटिंग द लोकल पेट्स. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट?
मेरा टेक पहले भी यही था, मेरा टेक आज भी यही है. काइंडली प्लीज अडॉप्ट, डोंट शॉप. इफ यू रियली वांट अ कंपेनियन, इफ यू रियली वांट somebody to give you love, so I would request you to adopt an indie. Reason being, you are going to give a beautiful life to a creature who cannot speak his own misery, right? And if you are purchasing dogs, so you are not doing anything, you are promoting the business of breeders, and by doing so they are doing inbreedings, and they itself deteriorating that progeny of the pet breeds. So basically, if you are a pet lover, actually love the pets and understand the misery that they go through when the breeders are forcing the breeding process. So please be kind enough, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला. And are the indies more? They are more intelligent, they are more strong physically, immunity wise, Okay. because उनकी काफी सारी जनरेशन इस ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में पूरी तरह से अडाप्ट हो चुकी है, ठीक है. एंड द ब्रीड विच यू आर लुकिंग फॉर, लाइक पीपल यूज्ड टू हैव चाव चाव. चाव चाव इज नॉट अ ब्रीड सपोज्ड टू बी हियर इन दिल्ली. जी जी जी. So they suffer a lot. They suffer from skin infection, they suffer from breathing issues. So In Siberian Huskies, I see people just के मतलब, yeah, Siberian Husky, the name itself suggests it's supposed to be in Siberia. Yeah. अब दिल्ली की गर्मी में उस बेचारे को छोटे से अपना 2 bedroom के अंदर आप उसको रखे हुए हैं. people have a idea कि हम तो उसको एसी में रखते हैं, बट आपकी एसी 16 डिग्री से नीचे नहीं जाती. एंड हस्कीज यूज्ड टू लिव इन माइनस डिग्रीज, एंड दे आर अ पेट हु आर नोन एज स्लज डॉग्स. सो दैट दे नीड लॉट ऑफ रनिंग एंड एक्सरसाइजेस. अगर वो नहीं मिलता तो उनकी बॉडी डिटेरिएट होती है, वो मेंटली डिटेरिएट होते हैं, और उनका लाइफ स्पैन शॉर्ट हो जाता है. Absolutely, there is a certain DNA of the dogs. There, जैसे हम लोगों का है, उनका भी है एक basic generations आप कह लीजिए, जो कि they have come down to being good in those particular climates. So let us respect that. हम अपने आप को pet lovers कहते हैं, animal lovers कहते हैं. Let us actually be a part of making sure that the pets and the animals are taken care of. So, sir, do you have a pet? Yes, I do have a pet. I have an indie. Wow. So कितने साल का है वो? अभी मेरे ख्याल से 4 साल का है. He is 4 years now. Okay. And anything specific that you do to take care of the pet? नाम क्या है उनका पहले? His name is Safedi. Oh, He was white in color, so I just, मतलब जब भी आप नाम सुनेंगे आपको खुद वैसे ही एक स्माइल आ जाएगी. it shouldn't be a fancy name. Whatever comes from your heart, you just put it. एंड सीधी सी बात है सर, चाहे दिलीप हो चाहे दाऊद, प्यार वो सभी को करेंगे. Exactly. सर टुवर्ड्स द एंड मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा. व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू, आपके दिल की आवाज क्या कह रही है आज की डेट में, टू व्हेन यू सी दिस थिंग्स अराउंड, व्हेन यू सी द पेरेंट्स, व्हेन यू सी द किड्स, इज देयर एनीथिंग दैट यूड लाइक टू कन्वे? I just love my profession and love doing my work, and I don't feel guilty, or I don't feel down anyway, and in my life, because I just love my patients, and that's why I'm here and I'm doing well. Perfect. Lovely. And as far as the parents are concerned, उनके लिए कुछ would you like to? बच्चों को ना फोर्स नहीं करना कभी भी. Do not force your kids to be a doctor, to be an engineer, or to be into a profession on the basis of monetary terms or social issues. Just let them be whatever they want to do. Let them listen to their heart. Because if you chase your dreams, money will eventually find its way to you. Yeah, really would like to thanks to my parents who didn't force me in choosing my profession, and yes, of course, a big thank you to my biology teacher Purvi Das. She helped me in she became a guiding light to me in finding my profession. She was the career coach for you. Yeah, she was the career coach for me. I have to say, sir, you've been lucky enough to have such a teacher and such parents. Thank you. Thanks to you also, the teacher and the parents, के इनको आपने इनके दिल की आवाज फॉलो करने दी. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Well, let us all make sure, especially the parents and the teachers, that we help our kids choose wisely. Well, thank you very much. Take care. Namaskar. Choose wisely.